और आपको प्रेयर बोलना है. Yes, so please join your hands for the prayer and we will start the prayer. 1, 2, 3, start. Very nice, one and all. Please mute your mic. Yes, thank you. Very nicely you presented the pledge. Now this is the time of a pledge. And once again, I will start from roll number 1. Yes, Vaishnavi, please present the pledge. India is my name is Vaishnavi. I study in class 1C. My school name is Kendriya Vidyalaya Ganesh King, Pune. Today I going to tell you a pledge. India is my country, and all Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of it, rich and very heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity along lies my happiness. Jai Hind. Beautiful. Excellent. I'm very happy
I impress. Very nice, Vaishnavi. So all the children, so you might have listened how Vaishnavi presented the pledge. So now you take your hands down and please listen. Roll number 2. Who is roll number 2? Arav Kumar is there. Roll number 2. Yes, sir. Yes. Roll number 3 है आपका. Okay. in my country, all Indians are my brothers and sisters. I love my country and proud of British and heritage. I shall give my parents, teachers, and all elders British and very respect and very heritage. Teach everyone. Mistakes. Please To mute my yourself. country and proud of नहीं. आप mute करो. Okay, but now you tried, but you did mistake. Arav Kumar, roll number 3. Arav Kumar, कैमरा ऑन करो. हाँ बोलो. Yes, sir. हाथ नीचे करो, मैं देखना चाहता हूँ आपको. हाथ नीचे करो. हाँ बोलो, प्लीज बोलो. भारत हमारा देश है, वह सत्वासी भाई बहन है, इसकी संभूति वल्लभ है. मैं आगे बैठा हूँ, आगे देखना है, मेरे तरफ देखना है. आप अपने माता पिता शिक्षक इन बुजुर्ग को सदा आदर करना चाहिए. आप अपने देशवासियों की प्रति सतत उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं. आप अपने माता पिता जय हिंद. नहीं, आरव कुमार कैमरा ऑन करो. अपने दीदी को बुलाओ. दीदी को बुलाओ. आपकी दीदी का क्लास नहीं है अभी, मुझे पता है. सर. हाँ, सामने आ जाओ, कैमरा के सामने आ जाओ. यस सर. उसको गाइड करना आपका काम है, ठीक है ना. सर और वो उसको ना मतलब बच्चा शर्माता है. सुनो, पहले आप उसके सामने प्रैक्टिस करोगी, उसका प्रैक्टिस करो. वो छोटा है ना, आपका काम है ना वो बताना. तो उसको इंग्लिश और हिंदी प्लेज आना चाहिए. मंडे तक आप वीडियो बनाएगी और मुझे भेजोगी. और जो भी मैं उसको काम दे रहा हूँ आपको उससे पूरा करवाना है. उसका पेपर भेजा क्या आपने? सर कंप्लीट हो गया, सिर्फ अपलोड करना रह गया. हाँ, तो कल ही भेजना चाहिए था ना आपको. तो आप तो हमारे स्कूल में 5 साल से पढ़ रही है, आपको पता है. आज मुझे 10 बजे तक भेज दीजिए, क्लास होने तक आ जाना चाहिए. और जब आपकी क्लास नहीं रहती उसके साथ बैठना है आपको, ठीक है. ओके सर. रोल नंबर 4. रोल नंबर 4. यस सर. यस, बोलो, प्लेज बोल के दिखाओ. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. I am proud of its rich and very heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Beautiful, very nice, keep it up. So now the last candidate, roll number 5. Roll number 5. Roll number 5. Roll number 5 is absent. Moin Patel, what is your roll number? 6. बोलो, आप बोलो प्लीज. 5 नंबर absent है. भारत हमारा देश
देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पे हमें गर्व है। हम इसके सहयोगी अधिकारी बनने का सदा आदर करते रहेंगे। प्रयत्न सदा करते रहेंगे। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। Moin Patel, I am not happy. You know earlier this pledge very well. आपको पहले ये प्लेज बहुत अच्छे से आती थी, आज आपने गलती कर दी। ठीक है, फिर से आप इसे अच्छे से याद करेंगे ना। आज का सुविचार कौन बोलेगा? हाथ ऊपर करो। आप मोबाइल पे हाथ ऊपर नहीं करना है, ऐसे दिखना चाहिए मुझे। ऐसे करो, मोबाइल पे नहीं करना है, मुझे नहीं दिखाई देता है। यस, कौन बोलेगा आज का सुविचार? आज का सुविचार राजवर्धन बोलेगा। राजवर्धन, पॉल एंड आदिश। राजवर्धन बोलो। आपका माइक बंद है। राजवर्धन, आपको चांस मिला, तुरंत बोलना है बेटा। राजवर्धन रामचंद्र कदम। किसी का आज का चीज का सुविचार लालच नहीं करना चाहिए। फिर से बोलो। मेरा नाम है राजवर्धन रामचंद्र कदम। किसी का चीज का लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। वेरी गुड। देन मैंने किसको बोला था और मैं भूल गया हूं, मुझे जिसको। पल बोलो आप। My name is Pearl Gulbakhshani. I am going to tell a thought. Try, but don't cry. Okay, very good. I repeat. Try, but don't cry. No, okay, I will not cry. I will try. Thank you. Well done. So we have to try every day. Very nice. Okay, we don't waste the time now. And today we are going to learn the maths. Okay, Siddesh, don't worry. Siddesh, we are going to learn the maths. And today I will give more student chance. Everybody will get chance from roll number 1. I will start from roll number 1. And when your turn will come, you have to answer. Gokul is sleeping. Gokul, please look at me. And yesterday you complete your English paper. Yes, yesterday you complete your English paper. I'm very happy to see, but I'm not happy to see your handwriting. I don't like your handwriting. So I request you one and all, please improve your handwriting. I'm just showing you how many of you gave the paper. All of you see here. Please mute yourself. Now 29 student paper already checked and returned. Now 2 students submitted now. Till 15 students have not submitted the paper. I will not give you marks. These 15 students, and among these 29, I want to show you Yugansh Nandanwas paper. I request you, please listen carefully. I'm just showing you Yugansh paper, how nicely he wrote. All of you see the Yugansh handwriting? Wow. And how bold and neat and clean he wrote in the blue line. Very good. Wow, beautiful. Yugansh wrote the paper very, very nice. I can read as you are sending me in the Google Classroom. It is very light. I can't read. So I'm showing you Yugansh paper. It is written according to 4 line, small letters in blue line, big letter, capital letter from red line to the 3rd line. I'm just showing you the paper. Very good, Yugansh, keep it up. Now, dear students, today we are going to learn this as we discussed in earlier period.
Please do not call me in between, sir, 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 sir. You will get chance. I know you know the answers. So everybody will get chance. Please do not raise your hand. सृष्टि, अथांग, सान्विता, आप हाथ ऊपर नहीं करोगे. हाथ ऊपर करोगे तो मैं चांस नहीं दूंगा. प्लीज आप हाथ नीचे करो, नहीं तो हाँ, वेरी गुड. तो मैं सबको चांस दूंगा. अल्फाबेटिकली मुझे लिस्ट में दिखाई देंगे, सबको चांस दूंगा मैं. Now here I am showing you different object. I will start from Adish Tribhuvan. Adish. Yes, Now there are two objects. The first one is a dinosaur and second one is a hippopotamus. Can you see this picture? Yes, sir. Yes. Which one is longer? First or second one? Dinosaur. Dinosaur is longer. Please use the word longer and shorter. Okay? Okay. Okay, Adish. Now, Arav Kumar. Now, this is your turn. Arav Kumar, I am showing you two girls. And you see one girl having short hair and another girl having longer hair. Which girl having longer hair? Arav Kumar. Arav Kumar. सॉरी, आरव कुमार को चांस नहीं मिलेगा क्योंकि उसने तुरंत आंसर नहीं दिया. आर्या जोशी. आर्या जोशी. Yes, sir. Yes, can you see these two girls wearing same uniform, having same hairs, but one girl having long hair and another girl having short hair? Yes, can you tell me? Sir, first girl. First girl have longer hair. पूरा बोलो. First girl have longer hair. बोलो. First girl has longer hair. Yes, Arya. और एक बताओ. You can say. Can you see the one more picture? Two girls are there. Which girl is longer? The first one or the second one? Second one. Yes, the second girl is longer than the first one. Very good, Arya. Now you can mute. Anand Sinha. Can you see the next picture of a cup and a jar? Anand Sinha. चलो, मैं अनन्या मुंडकर को चांस दे रहा हूं. अनन्या मुंडकर. Sir. Yes, I am showing you a picture of a jar and a cup. Which one is longer? Jar. Jar or a jug is longer than a cup. पूरा sentence में बोलो. Jug is a longer than a cup. Jug is longer Than a cup. a cup. Okay, very good, Ananya. Anand Sinha. Yes, sir. Say yes. आनंद बेटा बोलो जल्दी. आनंद, आपको कौन सा फ्लावर बड़ा है? फर्स्ट फ्लावर और सेकंड फ्लावर? First flower is big. Yes, the first flower is longer than the second flower. बोलो पूरा. आर्या म्यूट करो. Arya Joshi, please mute your mic. Thank you. Arya, please mute your mic. Yes. आनंद, आपको दो फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, उसमें से कौन सा फ्लावर लॉन्गर है बताओ. चलो, आनंद बात नहीं कर रहा है. आनंद बात नहीं कर रहे. नेक्स्ट, आप बोलो ना, मैंने आपको चांस दिया. First one, sir. Yes, the first flower is longer than second flower. बोलो. First flower is longer. First
flower is the longer than a second second flower. flower. Okay, well done, well done. जबरदस्त है आपका lip sync. Second flower. Okay, mute करो अभी आनंद. Very good boy. अनन्या मुंडकर क्या हो गया? आराध्या बुरबुरे. Yes, sir. Now you see two more girls are there. First girl is wearing short pant and second girl is wearing full pant. Which girl's pant is longer? Aradhya. Second girl's pant is longer than first girl. Very good, Aradhya. Yes. Arnav Panchmukh. Now here I'm showing you the rackets. Badminton, lawn tennis का rackets दिखा रहा हूँ. Which rackets is longer? Arnav Panchmukh. Second. Second one is longer than first one. Yes, very good. Asmi Sinha, can you name the pictures from the next one? Two animals are there. Can you name them? Asmi Sinha. Giraffe and Yes. the wolf. Wolf. Wolf not there. Okay, it's a fox. Okay, WOLF. Wolf. Which one is longer? Giraffe is the longer. Giraffe is longer than the wolf. Very good. Very good, Asmi. Athang Bagde. Athang. Yes. Yes, I'm showing you the next one. One tree is there and one sapling is there. Which one is longer? First one. First one. The first tree is longer than the second one. Very good, Athan. Avni Gadilkar. Now I'm showing you window. Two windows are there. Which window is longer? What, sir? Oh, you are not listening. Very good. Which window is longer? Below the giraffe, two windows are there. Can you see two windows? First window. First window is longer than the second. बोलो पूरा sentence में बोलो. First window is longer. Second window Second is window. longer. Okay, very good, Avni. Gokul. Now I'm showing you two tools. There are two stools. Which one is longer? Gokul. First tool. The first tool is longer than the second tool. Repeat. First stool. Is longer. Longer. Okay. Mute yourself. Vaishnavi, now the last one is for you. What you can see in the picture? Leaves. What you call it? No? Okay, you can call it is a leaves. Very good, no problem. Okay, which leaves is longer? Second one. Second one is longer. The second leaf is longer than the first one. Very good, Vaishnavi. Harshvardhan. Yes, sir. Now I am showing you two uniforms. Now you have to tell me the shorter one. Which one is shorter? The first one or a second one? Which one is shorter? Second one. Shorter, छोटा. Short मतलब छोटा. हर्षवर्धन, कौन सा वाला शॉर्ट है? फर्स्ट वन, जो लाइट ग्रीन कलर का है. The first one is shorter than the second one. Very good, Harshvardhan. Manvi, I'm showing you two scales. One is pink color and the another one is yellow color. Which scale is shorter? Manvi. Sir, second. The yellow scale is shorter than pink scale. पूरा बोलो. Yellow scale
is shorter than pink scale. Okay, very good, Manvi. Kartika. Yes, sir. Vaishnavi, please mute yourself. Kartika, I'm showing you two pencils. Can you name the color? Kartika, can you name the color? Yellow, black. Yes, which one is shorter? Which pencil is shorter? बोलो बेटा, शॉर्ट पेंसिल कौन सा है? Small. कलर बताओ, कलर. ब्लैक इज शॉर्टर और येलो इज शॉर्टर? Black. ब्लैक पेंसिल इज शॉर्टर देन येलो पेंसिल. बोलो फिर से. Black pencil and shorter pencil. Okay, very good, no problem. Moin Patel, I'm showing you two candles. Please tell me which one is shorter? Two candles. Moin Patel. Yellow is small. The second Shorter. candle is shorter than first candle. Repeat karo. Shorter candle is and Second Third candle candle. is shorter than first candle. shorter नहीं, candle मैं क्या is बता रहा हूं आपको. सेकंड कैंडल इज शॉर्टर देन फर्स्ट कैंडल. बोलो. second candle is shorter and Then first candle. Very good, Moin Patel. Now next chance goes to Navya Dash. Navya, can you see the glass? Glass is full of juice. Which glass is shorter? Second one. The second Second one one. is shorter class. Second one is shorter than the first one. Very good, Navya. Nilaksh Dongre. Nilaksh, can you name the picture? Yes. What is there? Can you name these? Feathers. Very good. You know the feathers. Which feather one is shorter? Second. Second. What is the color? Can you name the color? Brown. Brown. Okay, brown, purple is the shorter one. Very good, Nilaksh. Next, Pearl. Oh, Pearl, your favorite uniform. Pearl. Yes, sir. Which is your favorite color? I like pink. Oh, you like pink. So which one is shorter here? Frog is pink. Frog is shorter than yellow frog. Excellent. Very good. You stated that pink frog is shorter than the yellow one. Very good, Pearl. Pooja Shri. Pooja Shri. What you see in the second picture after the frog? Pooja Shri, can you hear me? Yes, sir. Yes. What is there in the picture? After yellow frog. Yes. What is there? First of all, you tell me the name. Stick. Okay, you are observing the stick. Okay, which stick is shorter? Second one is the stick. Shorter than first one. Okay, Pooja Shri, no problem. Good. Next chance goes to Prathamesh. Prathamesh, after the yellow frog, one is red, pink color and another one is in blue color. Prathamesh, can you name the object? Prathamesh. Yes, sir. आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? ये पिंक कलर और ब्लू कलर का है. Fish. Yes, very good boy. Fridge. Which fridge is shorter?
Second. Second one. The blue color is shorter than the pink. Very good, Prathamesh. Rajvardhan Kadam. Rajvardhan Kadam, can you see the ice cream? Yes, sir. Ah, which ice cream is shorter one? Second one. The Second. cup ice cream is shorter than the stick ice cream. Yes. दोनों भी म्यूट करो. ऋषभ होलकर. ऋषभ होलकर. Can you see the fan? Blue and Blue fan is shorter than. बोलो. Blue fan is shorter than pink fan. बोलो. blue fan shorter than pink Okay, fan. very good. Next chance goes to Sanvi Pardesi. Oh, Candy Pearl, please pay attention here. Sanvi, can you see the candy chocolates? Yes, toffees. Which one is shorter? Second one. What is the color of that chocolate toffee? Blue. Blue color is shorter than the green color. Very good. So we learn longer, shorter. Now here is the longest and the shortest. Tick the shortest object and cross the longest object. अभी आपको क्या करना है? I'm just telling. Please listen, प्रथमेश. ये वर्कशीट मैं आपको भेजूंगा. आपके मम्मी पापा आपको प्रिंट करके देते तो बहुत अच्छा. नहीं देते हैं तो आप मम्मी पापा को आंसर्स बताएंगे. मम्मी पापा आपको पूछेंगे which candle is the short and which candle is the long. Take the shortest object. Now you see the first candle, second candle and the last candle. Which is the shortest candle? सबसे short candle कौन सी है? साक्षी पाटिल. Yes, sir. Which is the shortest candle? The next 3 number. 3 number candle is the short. तो short candle को आपको क्या करना है? इसे right tick करना है. Yes, this is the shortest one. और जो लॉन्ग कैंडल है उसको क्रॉस करना है. ऐसे क्रॉस करना है. यस, मैं दिखा रहा हूं. क्रॉस. तो उसको क्रॉस करना है. तो कौन सी कैंडल सबसे लॉन्ग है? साक्षी. 1 number. 1 नंबर. सो 1 नंबर के बॉक्स में आप क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे. दैट इज द लॉन्गेस्ट. जो शॉर्टेस्ट है उसको करेक्ट करेंगे. सानवी आगे ध्यान दो. आपका ध्यान नहीं है. Next chance goes to Sanvi Khollam. Sanvi Khollam. Yes, sir. Now here I am showing you 3 animals. Can you name the animals? Sanvi Khollam, आपको कौन से एनिमल दिखाई दे रहे बताओ. Giraffe. Very good. Tiger. Very good. And the small one कौन सा है वो? Rabbit. Rabbit. हाँ, इसमें शॉर्टेस्ट एनिमल कौन सा है? Rabbit. ओके. और लॉन्गेस्ट एनिमल कौन सा है? Giraffe. यस. तो जिराफ को क्रॉस करना है और रैबिट को राइट टिक करना है. ठीक है. ये पापा को बोल देना है, प्रिंट करके दे देंगे आपको. नाउ नेक्स्ट चांस गोस टू सान्विता. सान्विता. Yes, sir. सान्वी खुल्लाम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Yes. Sanvita, what you can see after the animals? Can you name? Bat. Bats. Okay. These are called as rackets. The first one is table tennis, second one is badminton, and third one is lawn tennis. So which one is the shortest and which one is the longest? Can you name? The first one.
First one is longest. Shortest. Shortest one. Okay. And which one is the longest? Second one. Second one is the longest. Yes. The first bat is for the table tennis. The first bat is used to play the table tennis, which is the shortest one. And the second one, bat or rackets, is used to play the badminton, which is the longest one. Very good, Sanvita. Shagun Kumari. Shagun Kumari, welcome to school. Shagun, Yes, can you? teacher. Yes. What you see here? After the bats, what you see here? आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ? What you see? आपको क्या दिखाई दे रहा है? मुझे स्मॉल नहीं, मुझे मीडियम स्टिक्स नहीं है, ये स्केल है. ओके शगुन. The first one is a pink scale, second one is a orange scale, and last one is yellow scale. Which scale is shortest and which scale is longest? आप बता सकते हैं shortest and longest कौन सा है? लॉन्गेस्ट मतलब बड़ा होता है और शॉर्टेस्ट मतलब शगुन आप बोलो ना, आपको लंबा सबसे लॉन्गेस्ट स्केल कौन सा है? पिंक. पिंक. वेरी गुड. शॉर्टेस्ट स्केल कौन सा है? येलो. वेरी गुड. योर आंसर इज राइट. अभी क्लास मिस नहीं करोगी आप, ठीक है ना? आप छुट्टी पे थी. ओके, म्यूट करो. शिवांश कामठे. शिवांश कामठे, can you see the sticks here? Which stick is longest and which stick is the shortest? Please tell me. Third is shortest. Second is longest. The middle one is the longest. Very good, Shivansh. Shivansh Sarsar. Shivansh Sarsar. Yes, sir. What you see after the sticks? Juice. A glass full with juice. Wow. Which one is the shortest and which one is the longest? First one is shortest and third one is longest. Very good, Shivansh. Please mute yourself. Excellent. Next chance goes to कौन रह गया? अभी किसको चांस नहीं मिला है शिवांश के बाद में? शौर्य जाधव. Shaurya Jadhav. Yes, sir. What you see in the last picture after the glass? Yes. Man. Okay. Man. One is a college going boy, one is a small boy, and one is a gentleman. Which one is the short and which one is the long? Small boy. Small. Middle one is the smallest. Yes. And who is the largest or a longest? Test. Huh? Shortest. Okay, the last one is the longest man. Okay. Now you see a thicker and thinner. Thick and thin. Now the next chance goes to किसका number है अभी? सृष्टि ठाकुर. Srishti Thakur. Yes, sir. You see, these children are going to school. Both the boys having the book. Which boy have the thicker object, the big object? Thicker means big in size. बताओ मुझे. Second one. The second boy having a thicker book. He having a very big book. Very good, Srishti. Siddesh Kakade. What you can see in the second picture? Siddesh. Mute karo, Srishti. Siddesh Kakade बोलो. Yes, sir. आपको क्या दिखाई दे रहा है सेकंड पिक्चर में? Two
bottles. 2 bottles. Which bottle is thicker? First bottle is thinner and second bottle is Thicker. thick. Thicker. Bolo, repeat karo. Your answer is right. Please repeat it. First bottle is thinner, second bottle is thicker. Excellent. Very nice. Very nice, Siddesh. Siddhant Mishra. After the bottle, some stick-like picture is there. What is that, Siddhant? Yes, sir. हाँ, वो stick-like दिखाई दे रहा है, वो क्या है? आपको पहचान में आता है? Yes, sir. क्या है वो? The brush. Yes, brush, the painting brush. Now, can you tell me which brush is thicker? First one's First one is thinner and the second one is thicker. Yes, very good. आप rubber वाला भी बोलो, सिद्धांत. yes, sir. हाँ, which one is the thicker and which one is the thinner? First one is thinner. No. Second one. First one is thicker. First one is thicker. Second one is thinner. Very good, Siddhant. Tanish Katpale. Now 2 children are there. Tanish, batao. Tanish. Yes. Which boy is thick? Which boy is thick? Tanish, bolo beta. First boy is thick and second boy is thin. Pura bolo fir se. First boy is big and Second boy is thin. second boy is thin. Very good, Tanish. Urvi Patil. Urvi, can you see the pouch? Yes, sir. Which pouch is thicker and thinner? First one is thinner and second one is thicker. Excellent. बहुत अच्छा. Vedansh Tiwari. Now your favorite t-shirt, Vedansh. Which one is thicker and which one is thinner? First one is thinner and second one is thicker. Very good. Excellent. Vedika, can you see the tape here? Vedika. Yes, sir. Which one is thicker and which one is thinner? First one. First one क्या है? Thicker. Thinner है. First one जो है वो thinner है. ठीक है? And second one is thicker. बोलो वेदिका. Thicker. Yes. अभी tree वाला भी आप बताओ वेदिका. Tree वाला भी बताओ. Which tree is thin and which tree is thick? वेदिका, मैंने आपको चांस दिया है, बोलो कौन सा ट्री थीन है और कौन सा ट्री थिक है? वेदिका को मैंने 2 बार चांस दिया. वेदिका की आवाज नहीं आ रही. विहान शेलार बताओ. Yes, sir. Yes, sir. Which tree is thick and which tree is thinner? First tree. क्या है फर्स्ट ट्री? थिक है क्या थिनर है? Thin. थीन. और सेकंड ट्री? Think. थिक. वेरी गुड. विजय श्री, कैन यू सी द मुश्चाक? विजय श्री. Yes, मुश्चाक. Which one is thick and which one is thinner? First one is thick. Sound asala. Yes, first one is thick. Very good. Yes, yes, your answer is right. Very good. Second one. Okay, very good. Vijay Shri, please mute yourself. Vijay Shri, please mute yourself. You are playing and talking. Yes, Varun Pandit have joined. Varun Pandit, आपको पेंसिल दिखाई दे रहा है? Varun Pandit. Yes, sir.
Which pencil is thick, first or second? Second. Second pencil is thick and first pencil is thin. Very good, Varun. And now only one left here, that is युगांश. युगांश, आपको ये जो के पिक्चर है ट्री के नीचे, ये क्या है आप बता सकते हो? कौन सा? युगांश, ये ट्री के नीचे क्या है? एप्रो. आईब्रो. एप्रो नहीं, आईब्रो. हमारे आईज के ऊपर हो. Which eyebrow is thick and which eyebrow is thin? Thin. कौन सा वाला, पहला दूसरा, ये बताओ ना. फर्स्ट वन, सेकंड वन. First. फर्स्ट वन इज thin and second one is Fat. फैट नहीं बोलते, इसको थिक बोलते. क्या बोलते हैं? Thick. वेरी गुड. आज सबने सबको चांस दिया. ओके, म्यूट करो युगांश. वेरी गुड. तो डियर चिल्ड्रन, नाउ हियर इज थिनर. इसमें थिनर पता करो. इसमें थिकेस्ट एंड थिनेस्ट में करना है. इसमें हेवी एंड लाइटर. कौन सा वेट हेवी है और कौन सा वेट लाइट है? कौन सा हेवी है, लाइट है? बहुत शीट है ये. थिकेस्ट एंड थिनेस्ट. यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस करना है घर पे. और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने 2 वर्कशीट दिए. मैं आपको फिर से दिखाता हूं. आपको मैंने आपके लिए फिर से 2 वर्कशीट यहाँ पे दिए. देखो, फर्स्ट वन और सेकंड वन. तो आप यहाँ पे ये वर्कशीट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. समझ में आ गया? आपको ये भी घर पे प्रिंट करा सकते हैं. प्रिंट नहीं मिलता है तो आप मम्मी पापा के साथ बैठ के उनको बताएंगे आप कौन सा ठीक है और कौन सा थीन है. आप उनको बताएंगे तो वो आपको खुश हो जाएंगे और आपको टॉफी भी देंगे. आपके मम्मी पापा आपको टॉफी भी देंगे. और आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूं मैं आपको. जस्ट 1 मिनट. आ गया ये. ओके, मैं आपके ये जो दिखा रहा हूं, आप ध्यान दो. इसमें आपको घर में ये ऐसे मेजर करना है. देखो, इसको मैचिंग करो. आपको ऐसे घर में आपका टेबल होगा और टीवी होगा. आप हैंड से, फिंगर से ऐसे मेजर कर सकते हैं आप. ठीक है? तो ये हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे अभी. ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही. और एक रिक्वेस्ट है आपको, जिसका आज पेपर नहीं आएगा, जिसका आज पेपर नहीं आएगा उसको आज मार्क्स नहीं मिलेंगे. और आपने मुझे 10 बजे तक पेपर नहीं भेजा तो मैं आपको कॉल करूंगा. आपको पेपर लिखना पड़ेगा और पेपर को लेकर स्कूल में आना पड़ेगा. आप पेपर अपलोड नहीं करेंगे, आपको पेपर स्कूल में लेकर आना पड़ेगा. आप अपलोड करेंगे तो आने की जरूरत नहीं है. और मैं कल और परसों छुट्टी पे हूं. मैं एग्जाम लिखने जा रहा हूं. तो हमारी क्लास मंडे और ट्यूसडे को होगी. मेरी क्लास मंडे और ट्यूसडे को होगी. कल परसों मैं क्लास नहीं लूंगा. और अभी मैं मैथ्स का पेपर आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं. कहां पे भेज रहा हूं? व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं. गूगल क्लासरूम पे भी भेज रहा हूं. और आज ही आप मैथ्स का पेपर कंप्लीट करेंगे और गूगल क्लासरूम में एक पेपर को अपलोड करना है. मेरी बात सुनो प्रथमेश. आज ही मैथ्स का पेपर, मेरी बात सुनो, आज ही आपको मैथ्स का पेपर पूरा करना है. अभी आपका ईवीएस पीरियड नहीं है. मैथ्स का पेपर कंप्लीट करो और 12 बजे तक ये पेपर आपको मुझे भेजना है. मैं आपको व्हाट्सएप पे पेपर भेज रहा हूं और ये 12 बजे तक भेज देना है. कल और परसों में चेक कर दूंगा. मंडे को हम इंग्लिश पढ़ेंगे और ट्यूसडे को हम मैथ्स पढ़ेंगे. फिर आपको 10 दिन की छुट्टियां है. फिर हम न्यू ईयर में मिलेंगे. ठीक है? जिसको क्लास समझ में आ गई वो क्लास छोड़ सकता है. बाय नहीं बोलना है. बाय कैसे